जय भीम सनोज भैया। सनोज भैया जय भीम नमो बुद्धा। कैसे हो आप? तबीयत कैसी है दीदी? अभी सोकर उठी हो क्या? जय भीम भैया, सम्राट भैया जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अंकल जी जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा है। जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू अंकल जी, पढ़ रही हूँ आपका कमेंट। सो के अभी उठी हूँ भाई, आपकी बात सही है सम्राट भैया। रात में अचानक से ना मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। हम लोग 4:30 बजे तक जगे उसको लेके बैठे थे। जब वो सोई उसके बाद हम लोग सोए हैं। इससे पहले वाले कमेंट के पढ़े। जय भीम नमो बुद्धाय। ऊंचा ही बाबा साहब की जमाना छू नहीं सकता। साहब कांशीराम जैसा कोई भी हो नहीं सकता। पारक मालती मिशन बढ़ाना जिनके अरमान थे, भारत की शान थे, अब भी हैं और कल भी रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अंकल जी, बहुत अच्छी लाइन है। क्या हो गया था हमारी प्यारी भांजी को? भाई पता नहीं अचानक ना पूरी बॉडी में उसके एकदम जैसे, क्या बताएं, बहुत बड़े बड़े एकदम दाने उभर आए थे अचानक से। पता नहीं, रात में उसको इतनी जलन हो रही थी तो एकदम परेशान हो गई, चिल्लाने लग गई अचानक से। वो अपना डीजे वीजे लगा के लोग अपना इंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने देखा उस टाइम रात में भी 11:30 हो रहा था। अब हस्बैंड भी घर पे नहीं है, मैं अकेले कहाँ जाऊँ लेके, मैं परेशान हो गई। फिर मम्मी को बुलाई नीचे से, वो आई, पापा आए, सब लोग। फिर दवाई लेके आए। 4:30 बजे के बाद जाके फिर सोई है वो, तब मैं सोई। बिटिया को क्या हो गया था बताओ? कुछ नहीं अंकल, थोड़ा सा अचानक से ऐसे उसके ना पूरे बॉडी में पता नहीं क्यों दाने दाने निकल गए थे, एकदम जलन से हो रही थी, तब वो परेशान हो गई थी। अब ठीक है, थोड़ा सा लेटी है अभी। हाँ भैया, एलर्जी की प्रॉब्लम होने लग रहा था मेरे पास ना, मुझे भी ऐसा हो जाता है।
मुझे एक दो बार हो चुका था ऐसा। तो मैं अभी भी दवाई खाती हूँ एलर्जी की, मेरे पास एडवांस से रखी रहती है। मैं दवाई अगर खा लेती हूँ ना, जो सूट नहीं करती है मुझे हो जाता है, तो मैं दवाइयाँ रखती हूँ स्पेशल। एलर्जी की तरह उसको था ऐसा ही, पूरी बॉडी, तो पूरी बॉडी उसकी बिल्कुल भी जगह नहीं थी जहाँ एकदम ना, पूरा एकदम फेस लेके सर लेके पूरा था। खाने में कुछ नहीं भाई, दाल चावल रोटी खाई थी, काली मसूर की दाल बनी थी, चावल रोटी बस यही खाई थी, बाकी कुछ वैसा नहीं खाई थी। थैंक यू भैया, सम्राट भैया, थैंक यू। मैं भी तो दो दवा हमेशा रखता हूँ, एक एलर्जी की और एक क्लोनाफिट, अच्छा नींद की रखना चाहिए भैया। मैंने और बताओ आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर रेड्डी की सेलुटोरिजियन और टेक्नो क्लोनाफिट दो दवा मैं भी रखता हूँ, क्या करूँ? रखना चाहिए भैया, घर में रखना चाहिए। इमरजेंसी में कब क्या हो जाती है। मैं तो वैसे दवाई ज्यादा ही रखती हूँ भैया, बुखार उखार भी सब रखती हूँ। क्योंकि मुझे भी एलर्जी की प्रॉब्लम है, मेरे शरीर का पित्त बढ़ जाता है, तो मेरे शरीर में बहुत बड़ा एलर्जी भर करता है शरीर में। हाँ भैया, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है।
थैंक यू सम्राट भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। नाश्ता वास्ता हुआ आपका? कुछ नहीं दीदी, अभी मम्मी आई हैं, उनकी तबीयत खराब है, अभी उनका जांच करवाना है, अभी उसी में सोच रहे हैं क्या करें, दुकान पर भी जाना है। मम्मी को क्या हुआ भैया? मम्मी को क्या हो गया सम्राट भैया?
थैंक यू अजिंदर भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो आप? कैसे हो कंचन सिस्टर? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? अजिंदर भैया स्वागत है। सम्राट भैया लिख रहे हैं तुमको बहुत दिन से बुखार हो रहा है और एक हाथ नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्यों, 1 महीने से, और आज मुझे पता चला, वह बताए हैं। उनका टेस्ट करवाओ भैया, सम्राट भैया टेस्ट कराओ, उससे पता चल जाएगा। आज के टाइम में बुखार बहुत खराब चल रहा है। खाना हो गया आपका सिस्टर? नहीं भैया, मैं तो 8:30 बजे बिस्तर में से निकली हूँ। रात में ना मेरी बेटी की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी भैया, ने मैंने रात 4:30 बजे तक जगी हूँ। इसके बाद सुबह लेट उठी, सो गई थी। उनको बहुत दिन से बुखार हो रहा है और एक हाथ नहीं उठ पाता। क्यों 1 महीने से आज मुझे पता चला, वह बताई है मेरे से फोन पर, कभी नहीं बताई कोई बात। होता भैया, नहीं बताते हैं, माँ बाप अपने दर्द छुपा लेते हैं सम्राट भैया। अच्छा जी, बेटी को मेडिसिन दी आपने? हाँ भैया, मैंने रात में दिया। उसको एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी भैया, पूरे बॉडी पे एकदम ना एलर्जी हो गई थी और बहुत जलन हो रहा था, अचानक से ऐसे हुआ था। तो बहुत परेशान हो गए थे, रात में सोई नहीं, हम लोग लेके जगते रहे। और बताइए भैया, आपका हो गया? जिंदर भैया, आपका नाश्ता वास्ता हो गया? आपको लाइक नहीं किया, अब कर रहा हूँ लाइक आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। अभी ठीक है बेटी? हाँ भैया ठीक है, अब ठीक है। हस्बैंड अभी आने वाले हैं ना, आ जाएंगे तो लेके जाएंगे हम उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास। क्योंकि अभी ना हमने फोटो खींच के रखा है उसका, एकदम पूरे जिस तरीके से हो गया था, ऐसे अच्छा नहीं है ना, कभी फिर हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हस्बैंड की नाइट ड्यूटी रहती है ना, घर पे थे नहीं, इसलिए मैं अकेली थी, परेशान थी। मम्मी पापा थे, वो बुजुर्ग है, कहाँ लेके जाएंगे। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय सम्राट भैया। मैं सिस्टर आज 6:30 कर लिया था मॉर्निंग में। अच्छा भैया, आप शाम को बहुत फास्ट करते हो, सुबह भी थैंक यू भैया। और बताइए भैया, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? जिंदर भैया, आप सब बहनों का आशीर्वाद है सिस्टर। थैंक यू सो मच भैया, सब बढ़िया रहना चाहिए, जो जहाँ रहे। हमारे महापुरुषों की करुणा है भैया, उनके आशीर्वाद से सब संभव है। थैंक यू भैया, थैंक यू अजिंदर भैया, थैंक यू सो मच। सब ठीक है सिस्टर, ठीक ही रहना चाहिए भैया। आपने कल सिस्टर की लाइव पर क्यों नहीं बताया कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं? तभी तो मैं चली आई भैया ना, जब उसको ऐसे हुआ ना, वो लोग तब से डीजे लगा के ना उस टाइम एंजॉय कर रहे थे, सब जग रहे थे, मेरे तीनों बच्चे जग रहे थे। ये वो लोग ना रात में एंजॉय कर रहे थे। तो मैं जब दीदी के लैब में गई तो मेरी बेटी मेरे पास अचानक गई, मम्मी देखो मेरे क्या हो रहा, बहुत जलन हो रहा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने तुरंत कमेंट करना छोड़ दिया, मैं पहले उसको देखी तो मैंने कहा बेटा ऐसे क्यों। फिर मैंने नारियल का तेल लगाया, फिर देखा और उभरते गए और वो एकदम रोने लग गई। तब मैं परेशान हो गई भैया, फिर दोबारा कहा, मैं कमेंट ही नहीं की।
तब तक सब एंजॉय कर रहे थे, सब जग रहे थे। आप भाई को अपना नहीं समझते। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, जिंदर भैया समझते हैं। आप जैसे भाई मिले कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसा नहीं है जिंदर भैया, हम सबको अपना भाई ही मानते हैं। आपको पता है ना, हमने अपनी जिंदगी में भाई को खोया है, तो भाई का समझते हैं क्या होती है फीलिंग। चलो कंचन जी, आप डेली आया करो लाइव में, भले ही 5 मिनट को ही आओ, पर आया करो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आएंगे अंकल, जरूर आएंगे, टाइम लगा के आएंगे आपके लाइव में। मैं सिस्टर को पूछ रहा था कि कंचन सिस्टर चली गई क्या। हाँ भैया, मैंने तुरंत फिर आ गई। मैं तो सोची थी कमेंट करूंगी, आप लोग जब तक रहेंगे तब तक रहूंगी लाइव में, क्योंकि मैं काम वाम करके फ्री हो गई थी, कुछ काम नहीं था तब। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, सिस्टर बिना बताए चली गई लाइव से। तभी तो भैया मैंने ना बाय बोला, ना किसी से दोबारा कुछ रिप्लाई दिया। मैं सोच रही थी लोग कमेंट कर रहे होंगे, मतलब फिर मैं फोन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी। तभी मैं सिस्टर से पूछा। अच्छा भैया। सॉरी भैया, दीदी से बता देना, क्योंकि मैं बता भी नहीं पाई, उनकी लाइव चलेगी तो आप बता देना। कोई बात नहीं है सिस्टर, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नहाना, नहा लो, गर्म किया, फिर मैं दूसरा लगा दूंगी। मैं आपको बोल तो रहा था कि सिस्टर से युद्ध करके हटा। हाँ भैया, मैंने तो उसका जवाब भी दिया था कि कभी कभी होना चाहिए भी लड़ाई। उसके बाद में ये कमेंट और कुछ किया था, फिर उसके बाद मैं फिर चली आई तुरंत जब उसकी तबीयत खराब हुई तो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एंजॉय होना चाहिए। सिस्टर से तो रोज होती ही रहती है। साधना सिस्टर वैसे है भी, बुरा नहीं मानती हैं, बहुत प्यार से बात करती हैं। कोई दिन बिना लड़ाई के जाता नहीं। यही तो होता है भैया, एक भाई बहन का प्यार, एक दूसरे के प्रति समझना, अपने परिवार की तरह। पर सिस्टर बहुत अच्छी हैं, अच्छे हैं भैया, बहुत अच्छी हैं, साधना सिस्टर बहुत अच्छी हैं।
चलो अब इंदु जी की लाइव पर चला रही हैं, उनकी लाइव में भी जाना, थोड़ा टाइम उनको भी देना है। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम भैया, जय भीम, थैंक यू सो मच। जाइए अंकल जी आप। कभी कभी सिस्टर गुस्सा कर जाती भी हैं। अरे भैया वो मन के ऊपर ही से सब लोग कर जाते हैं। पर कभी इस भाई को भूलती नहीं है। भैया कोई खिलवाड़ थोड़ी होता है भाई को भूल जाना। क्यों भूलेंगी। कल मैंने सिस्टर को बोला जाने की इजाजत दो। अच्छा फिर दीदी ने क्या बोला। टिक कर बैठो। अच्छा दीदी ने बोला टिक कर बैठो। आपको लगता होगा मैं लड़ता नहीं सिस्टर से। पर रोज होती है। अच्छा लड़ाई रोज हो जाती है।
कोई और हो सिस्टर भगा दे। नहीं भैया। क्योंकि मैं जब गुस्से से बोल देता हूँ ना। अच्छा। क्योंकि वह हम सब भाइयों के लिए भी लड़ जाती हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल, हमारा भी फर्ज होता है, जो हमारे साथ खड़ा हो हमें खड़ना होना चाहिए। मैं कभी सिस्टर की तारीफ नहीं करता उनके मुंह पर। बिल्कुल भैया बिल्कुल, अच्छी हैं दीदी भी, सब भाई भी अच्छे हैं, पर अच्छी हैं वह आप बता देना। मैं तो हमेशा बोलती हूँ भैया। थैंक यू भैया, जिंदर भैया, थैंक यू सो मच। बोल देना भाई आपको तारीफ करते हैं। जरूर बोलेंगे भैया, जरूर बोलेंगे। तब देखना सिस्टर का एक्शन क्या रहेगा। जब आप लाइफ में रहेंगे तभी बोलेंगे दीदी क्या बात है, भैया आपकी बहुत बड़ाई करते हैं। उनको तो लगता है मैं लड़ता ही है। अच्छा भैया। उनको देखना मजाक लगेगा। हाँ वही तो कह रही हूँ ना, बोलने के बाद देखना एक्शन क्या रहेगा।
पर उनको भी पता है कि केयर करते हैं सब भाई। बिल्कुल भैया, क्यों नहीं पता है, क्या हमें एहसास नहीं होता है? सबको एहसास होता है भैया, एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है। कल भी लास्ट 1:15 तक थे। अच्छा, जब तक लाइव क्लोज नहीं हुई थी। अच्छा भैया, अच्छा लाइव को एंड करवा के फिर जाते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। हाँ जी सिस्टर, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। हरियाणा की यही पहचान है, पंजाब लुधियाना। हाँ जी, हाँ जी, ये पहचान है हर, बहुत अच्छा लगता है। हमारे भतीजी भतीजा भी ऐसे ही बोलते हैं, हाँ जी बुआ जी, हाँ जी। पंजाबी में कभी कभी मेरे भतीजा बोलते हैं, पहचानो कैसे, बात समझो। थैंक यू भैया, थैंक यू। पंजाब। हम्म। बिल्कुल सिस्टर जी, हम सब भी फैमिली वाले हैं। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। हम 3 भाई हैं बस। अच्छा, सिस्टर नहीं है भैया आपके? तो बहने की कमी का पता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं भैया, हम सब बहने ही हैं, फिर भी आप फीलिंग को समझते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सैल्यूट है भैया। जिसकी बहनें हैं वो तो कद्र ही नहीं करते हैं। तभी तो मैं अपनी हर सिस्टर का ख्याल रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अजिंदर भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा डीपी देखो, मेरा एक बेटा है बस, उसकी भी बहन नहीं। अच्छा भैया, बहन भी आ जाएंगी हमारे बाबू के लिए। ना मेरी कोई बहन है।
ना शिवानी की कोई बहन है। लड़के का नाम शिवानी है भैया। अच्छा, मतलब बेटे की ना कोई मासी है। अच्छा भैया, अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू। भाभी का नाम शिवानी है, वाइफ का नाम है। हाँ भैया, समझ गई। थैंक यू भैया, समझ गई। ना कोई बुआ, ना कोई मौसी। होता कभी कभी जैसे कि ऐसा फील होता है कि होना चाहिए सब लोग जिंदगी में। बाल्टी खराब हो गई है। ये बात तो है सिस्टर, जिनके नहीं होती सिस्टर उनको कदर करनी चाहिए। भैया, कदर सबको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, लेकिन ना एक सोच सोच का फर्क होता है सबका। जिनकी होती है ना उनको सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन नहीं समझते हैं बात को। सब सोच का फर्क है सिस्टर, बिल्कुल भैया, वही चीज तो कह रही हूँ। इंसान का ना सोच सोच का फर्क है। जिनको अपने परिवार की कद्र होती है ना वही दूसरे का करता है भैया। लोग पता नहीं किस तरह किसी की लाइफ में गाली गलत कमेंट कर देते हैं। करते हैं भैया, मैं देखती हूँ सबके लाइफ में ऐसे करते हैं। ये अपने घर से शायद यही सब सीखते भी हैं, जबकि उनके घर में भी माँ बहन होती हैं। क्यों भैया, बिना माँ बहन के थोड़ी होते हैं, बहन नहीं होती फिर भी माँ तो होती है जो उनको जन्म देती है। गाली सुन लेंगे वो चलेगा, लेकिन दूसरे को गलत कमेंट करना नहीं छोड़ते, और खुद की माँ बहन एक करवा लेते हैं। अरे वही इज्जत से बात करते तो उनको भी सम्मान मिलता, लेकिन काहे करेंगे वो ऐसा बिना सुने चार बात। उनकी आदत होती है। वही बोल रहा हूँ सिस्टर जी। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिस्टर, मुंह पर तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। मुंह पे कहीं बोलेंगे भैया, उनके अंदर इतनी थोड़ी होती है मुंह पे बोल देंगे। इस तरह से करते हैं तो इस तरह से करते हैं। हाँ,
अपना तो एक ही उसूल है, बिल्कुल होना ही चाहिए भैया। अगर कोई सिस्टर है तो सबसे पहले वह रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट जरूरी है सबका। बुद्ध की कृपा से आज तक कोई कह नहीं सकता कि इस भाई के किसी को गलत बोला। क्यों बोलेंगे भैया? जिसके अंदर अच्छी सी प्रेरणा हो, जिसके अच्छे संस्कार हो, नहीं बोलते हैं। समझे? बोलते वही है ना जो गंदे, बस अब क्या बोले लाइव में। ऐसे लोग बोलते हैं जिनकी मानसिकता एकदम घटिया होती है। वही लोग ऐसा करते हैं, बाकी सब थोड़ी करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सिस्टर, बिल्कुल भैया। थोड़ी हिंदी टाइप करके देखता हूँ। आपकी हिंदी भी टाइपिंग वेरी गुड, बहुत अच्छी है भैया। आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, वरना आदत नहीं पड़ेगी हिंदी टाइप करने की। हाँ, फिर संजय भैया की लाइफ खराब हो जाएगी। संजय भैया की लाइफ खराब हो जाएगी। कोई मिस्टेक हो तो बता देना। कुछ मिस्टेक नहीं है भैया, कोई मिस्टेक नहीं है भैया। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, संजय भैया की लाइफ फिर खराब हो जाएगी। क्योंकि मैं हाथ से टाइप करता हूँ, बोलकर नहीं। हम लोग भी भैया हाथ से टाइपिंग करते हैं, जब लाइव चलती है ना तभी कर देते हैं बोल के, मतलब किसी की जब अपनी चलती है तब, नहीं तो वैसे हाथ से टाइपिंग करते हैं हम भी।
हाँ जी, हाँ भैया। पहले सिस्टर हाँ बोला करती थी। अच्छा भैया। कोई भी बात हो हाँ बोला करते थे। सिस्टर पर पंजाब में अगर कोई अकेला हाँ बोले तो अच्छा नहीं समझा जाता। हमें पता है भैया, हमें पता है क्योंकि हमें उधर के एरिया के बारे में पता, वहाँ कैसे लोग बात करते हैं क्या चीज। क्योंकि हमारी फैमिली में सब वहीं रहते हैं, लुधियाना पंजाब। मैं अक्सर जाती रहती हूँ। हाँ के साथ हाँ जी लगाना होता है, सभी में हाँ जी। हाँ भैया मुझे पता है। हाँ जी, खाना खा लिए हाँ जी, ये चीज हाँ जी। आंटी लोग भी ऐसे सुबह उठती है पहले वो जी हाँ जी। काफी आंटी तो राम जी बोलती हैं। तभी मैं हाँ जी लिखता हूँ। थैंक यू भैया, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। लगाना भी चाहिए जी भैया, किसी को इससे सम्मानित होता है कि नहीं। चलो अब तो सिस्टर हाँ जी ही बोलती है। बिल्कुल भैया, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए सामने वाले को। जैसे पाजी। अच्छा भैया।
वीर जी। हाँ भैया, थैंक यू, थैंक यू। मैं समझ रही हूँ भैया जी, लगाना मतलब रिस्पेक्ट देना है, किसी को सम्मान देना। बिल्कुल, बिल्कुल भैया, इस चीज़ को मैं आपको समझ रही हूँ। फिर लगाना ही चाहिए, बिल्कुल। चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा, हमारा फर्ज होता है हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देना। एक्चुअली क्या है ना, आज के समय में लोग ना तो धड़ाका की बात करते हैं। बिल्कुल संस्कार नाम की चीज़ बिल्कुल भूल चुके हैं। वार्न लोग बोलते हैं या इसको अकल नहीं है। हाँ भैया जी, पंजाब में बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ जी सिस्टर, हाँ भैया, यस के भैया, जय भीम। मीडिया खुल गई का भैया?
नींद खुल गई क्या इसके भैया? जय भीम भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू बाजी हमारे अजिंदर भैया बोल रहे हैं। सोनू भैया ठीक है। सोनू भैया अजिंदर भैया आपको जय भीम बोल रहे हैं। कहाँ फिर सो गए दोबारा आप? थोड़ी थोड़ी हिंदी की आदत पड़ रही है। ओके भैया, थैंक यू। सबके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। थोड़ी टाइपिंग तेज हो रही है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, समझे कि आपकी कोचिंग चल रही है हिंदी सब्जेक्ट की। बिल्कुल कंचन सिस्टर जी। हाँ भैया, कुछ गलत तो नहीं बोला ना? क्योंकि अपने काफी भाई बहन इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ भैया, बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं। पहली बात भैया, जो गांव से बिलोंग करते हैं ना, सब नहीं, बहुत ऐसी बहनें, बहुत ऐसे भाई हैं जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित हैं। जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हम लोगों के लिए। तो अब कोशिश करा करूंगा हिंदी टाइप को। बिल्कुल भैया बिल्कुल।
जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, सीमा सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय। कैसी हो बहन? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ सिस्टर, आप बताओ।
जय भीम नमः बुद्धाय सनोज भैया, जय भीम। सनोज भैया कैसे हो आप?